Okay, everyone. So we'll start the session as Anga ma'am has already arrived. Yesterday, ma'am has taught us some function like some average formula, how to use if the large function, salary calculation and all, conditional formatting. So today, ma'am will teach us some more thing in Excel. So just without wasting any time, I hand it over to Anaga ma'am. Anaga ma'am, you can start the session, ma'am. Thank Okay. you. Yeah. Good morning, everybody. I suppose yesterday's lecture was quite good for you. If you have any doubts in that, you can ask in this session also. Now, today, hello, am I audible? Yes, ma'am, you are audible and voice is also very clear. Okay, fine. So today we'll start with some shortcuts in Excel. How can we do our job, or how can we enter our data or do some calculations in this very quickly? Not just by using functions, but also by using the shortcuts, we can do these things. Yeah, is my screen visible? No, ma'am. Okay, just a second. Yeah, now is it visible? Yes, ma'am, yes. Okay, fine. So these are the basic shortcuts I have written. It starts from like alphabetically I have written from A to Z. See, first shortcut is Control A, that is the basic thing. You can select all the contents of the worksheet. Then you have Control B, that is you can make any text as bold. Now, just I will show you, just I will first explain all the first 5 shortcuts and I will show how we are going to do that. Okay. Right. Now Control A is to select all the contents of the worksheet. Control B is to make any sentence or any numerical value, text value as bold. Control C copies the contents of the worksheet. It is not only to copy the contents in the same workbook, you can copy it in the different worksheet also. Control D is to duplicate or fill down. Then Control F is to find. Control G is to go to a specific cell. Now Control A, what we have seen, we will do it practically. That is select the current, select all the data which is present in the current worksheet. Not in the second. दूसरा second worksheet select नहीं होगा या कोई भी पूरा workbook select नहीं होगा. Only the current sheet will be selected. So just press Control A. The whole worksheet worksheet is selected. Now if you want to do any of this option, copy this and add it into a second worksheet, you can do the same. Yeah, is this clear? Then Control B is bold. So if I select any of the, suppose I have written suppose a name of a fruit, suppose mango. Now just press here Control B. You can see the thing converting into bold. Then Control C is to copy the contents. Now suppose I am selecting this much. Just pressing Control C. And I'm adding here another worksheet. Just pressing here Control B. The whole data will be copied. Just press Escape to deselect.
Control duplicate, control D is duplicate or fill down. Okay, suppose I'm selecting this one and so this will be done. Like if I'm writing here any of the name and I want it exactly below, it won't be displayed in like some 2, 3, 4 rows are left, and then if I want to display you have to do copy paste. अगर आपको exactly नीचे ही चाहिए उसका word तो it will be, you can do it by doing control D. Suppose कुछ names repeat करने हैं या कुछ departments repeat करने हैं. Suppose I am writing department as sales और मुझे यहाँ भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए. So just do these things by using control D. So it is clear? Yeah, my voice is audible? Yes, ma'am. Okay, fine. Control F is to find, so just press Control F using the shortcut. You have find and replace. So just आपको जो भी word चाहिए, suppose B या bold आपको find करना है, just type the word bold and then find next. In that you have options like within the sheet specify करना है या पूरा workbook में देखना है. So if you want in a specific sheet, then this sheet one will be only searched. पूरा वर्कबुक अगर यहाँ पे आप देते हो तो जितने भी शीट्स हैं in that it will search the word as bold. Then search by rows or search by column, how you want. Then अगर फॉर्मूला में भी बोल्ड लिखा है तो फॉर्मूला में भी ढूंढना है या वैल्यूज में भी उसको सर्च करना है. स्पेसिफिकली अभी यहाँ पे बोल्ड मैंने बी कैपिटल में लिखा है एंड आई एम सर्चिंग इट इन स्मॉल लेटर्स. सो इफ आई एम गिविंग द ऑप्शन मैच केस एज ऑन, आई एम कीपिंग दिस ऑप्शन ऑन, सो इट विल सर्च विद द कैप्स एज बी कैप्स में लिखा है वो ऑप्शन के साथ सर्च करेगा. यहाँ पे स्मॉल में लिखा है तो इट शुड शो मी no contents. See, we could not find what you are looking for. Click options for more way to search. Now here I have to type shift and B and bold. Now it will search. Now it will find the things which are written. Now here it is searching जो bold में लिखा है वो. Here I have to make general. And with this bold you get an option of replace. Bold के जगह पे आपको क्या करना है, you can replace it with the same. Find all तो उसने यहाँ पे डिस्प्ले करके दिया है, एक्सेल का शॉर्टकट है. शीट उसमें कंट्रोल बी यूज किया है बोल्ड और वो वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे. फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो इट विल शो दोस थिंग्स. 2 सेल्स फाउंड. उसको अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हो. Now we'll search for the word as sales. What is showing me as sales? उसको अगर यहाँ पे मुझे रिप्लेस करना है तो I can give here as जहाँ पे डिपार्टमेंट सेल्स है रिप्लेस इट विथ एडवर्टाइजिंग. So those things जहाँ पे सेल्स है it will be replaced. अभी यहाँ पे सेल्स अगर मुझे वही रखना है, I want the next sales to be replaced, so I will go for find next and then replace.
So the sales in between after two advertising departments, the third has remained same as sales. Now fourth one has changed. Yeah, is this clear? Any doubt in this? For workbook, rows, formulas, and options. Yeah, am I audible? मेरा आवाज आ रहा है? यस मैम, आ रहा है आपका आवाज. Okay, so is this clear this topic और उसमें कुछ doubt है? क्लियर है. पार्टिसिपेंट आपको कोई डाउट है क्या, तो आप पूछ सकते हो. ओके मैम, यू कैन कंटिन्यू. Okay, fine. Now we have control G, go to specific cell. Suppose I am pressing here as control G. So it will ask me where you want to go. तो रेफरेंस में क्या दे सकते हैं यहाँ पे, कोई बताएगा? If reference I am giving as P4, so it will go to the specific cell as P4. Here, if I am giving control G, here if I am specifying as F and 15th row, so F15, so it will go to the F15. Okay, then you have control H, that is replaced, we have seen. Control I, that is italic. Control K, it is hyperlink. Can anybody tell me what is the meaning of, or what you get by seeing the word hyperlink? क्या होगा? मैम जो भी वर्ड रहेगा ना उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, हाइपरलिंक रहेगा तो वो डायरेक्टली साइट पे जाता है. Okay, whether you have to specify a site address or you can open any other file, like Word open करना है, PowerPoint open करना है, या दूसरा कौन सा Paint open करना है? मैम फॉर ऑल. All in the sense, हाँ, वेबसाइट भी ओपन हो सकती है. हाँ वेबसाइट भी ओपन होते हैं. या वर्ड भी ओपन होगा, ये दोनों में से कोई भी नहीं होगा. मैम हो रहा है. See, hyperlink is just a link between. Yes, what you said is correct. See, hyperlink is what you can link any, like site भी link कर सकते हो, Word file, Excel file, PowerPoint file, Photoshop file, .NET file, any file. Like from Excel, you can move to any file. Okay. Now Control L or T, what is that format? Create a table. ये क्या हो सकता है? टेबल इन द सेंस टेबुलर फॉर्मेट ऑलरेडी है रोज एंड कॉलम्स का. सो व्हाई शुड आई यूज दिस ऑप्शन? क्या होगा ये? मैम इसमें ना टेबल कंडीशन अप्लाई होती है, जिससे हम सिर्फ ऊपर वाले सेल में फॉर्मूला लगाएंगे ना तो उसको ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं, नीचे वाले सेल में ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाते हैं. Yes, correct. So no need to apply any specification. You can go directly by using the formula, or else you can just suppose यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है, like sales department डाला है. What salary?
So it will display it in a decorative format plus it will apply a filter also. तो यहाँ पे अगर मुझे specify करना है, just a second ना. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Anaka ma'am. Hello. Yes ma'am. So sorry for the disturbance and inconvenience. Okay. No problem ma'am. We were studying about create table. Now I have written a certain data. Here I am applying a control T. So it will display it all the columns in a decorative format. Plus it will apply a filter. Now filter may I am selecting previously I'm removing all the select all options. And here if I want to just display the records of B, so the only records of B will be displayed. If I want to display here only the data of sales department or advertising department, just select the advertising, the whole data like name, department and salary, all the details will be displayed. No need to convert or no need to give any decoration options for all these things. Just apply or just enter the data and it will convert it into applying control T. It will just convert all the things into a tabular format with decorations. Then control N is a new workbook. This is this you must all you must have known already. Control O, that is open the already created. Ma'am, you are not audible ma'am. Yeah, am I audible? Hello. Yes ma'am, you are audible. No, disconnect हो गया था, so sorry for that. No problem ma'am. Okay, the screen is visible. Yes ma'am. Okay.
Now just tell me fill right कैसे करना है. I have entered 10, 20, 30 numbers. Now what should I do here? Just type in और control R और क्या करना है? Select करना है numbers कैसे करेंगे? If I'm selecting whole thing, तो control R हो सकता है. कैसे करना है फिर? So just arrow key से cursor that is cell को नीचे लाओ और just press control R. We have seen a duplicate or fill down option that is control D. So उससे क्या होगा? एक के नीचे एक we can fill the numbers. Now I want to fill it in on the right side. So we have to use control R that is fill right. ये difference समझ में आया? Then Yes, we ma'am. have, Yes, ma'am. yeah, so control R and control D both are different. Control D is duplicate or fill down. Control R, the name itself suggests you can fill it on the right hand side. Control S is the save the newly created workbook. ये option आपको पता है. Control U is Control X is used to cut any text. Control Y is redo. Control Z is undo. These are some familiar shortcuts. Control plus F1 is show or hide the ribbon. Control F1. Control F1, Control F2, that is print. Then Control F4 is the shortcut to close the permanently close the workbook. Now just we can see Control plus F6. F6 is switch between one workbook to another. वर्कबुक या वर्कशीट में स्विच ओवर कर सकते हैं. कैसे करते हैं? अभी यहाँ पे लिखा है स्विच बिटवीन वन वर्कबुक. वन वर्कबुक इन द सेंस यू कैन मूव फ्रॉम वन एक्सेल फाइल टू अनदर और एक शीट से दूसरे शीट में जा सकते हैं. Yes, can anybody answer this question? Whether it is to switch between one workbook, that is one Excel file, or one single sheet. Control tab, ma'am. Control tab नहीं, Alt tab you can do, but you Alt can, tab. हाँ, Alt tab से भी कर सकते हैं, लेकिन Alt tab से 2 या 3 different applications open रहेंगे तो उसमें switch over कर सकते हैं. Control, हाँ, Control और F6 से you can specifically go in Excel के different files. My question was can you shift between worksheets या workbook using Control F6? Yes. वर्कबुक. That means only Control F6 से फाइल्स में शिफ्ट हो सकते हैं. यहाँ पे आप करके भी देख सकते हो. ऑल टैप करते हो तो टास्क बार पे अगर डिफरेंट एप्लीकेशंस ओपन रहेंगे उसमें स्विच ओवर कर सकते हैं. कंट्रोल प्लस F6 से ओनली एक्सेल के वर्कबुक्स में जा सकते हैं. ओके. Control F9 is to minimize the workbook. Control F10 is to maximize. That is, you can use these options here. Minimize का भी ऑप्शन होता है और maximize का भी ऑप्शन होता है. Then Control plus arrow key move to the next section of the text. अभी यहाँ पे मैंने अगर ऊपर कुछ क्लिक करके रखा है और Control arrow key से जाते हैं तो it will move to the next section. ऊपर नीचे
Okay. Then control plus space bar, that is entire column. Suppose control and space bar, तो entire column it is selecting. अभी cursor कौन से column में रहेगा? The text I have extended, so जितना बड़ा column है उतना बड़ा वो selection करेगा. Suppose my cursor is here, control plus space bar, the current column is selected. अभी यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ the text I have written is more than that specific column, इसके लिए वो उतना बड़ा column ले रहा है. Okay. Then shift plus space is the entire row. Shift and space, the entire row is selected. Suppose I am selecting this one, shift and space. Control plus. You can use control and plus option. Control plus option to insert a new column. Now here you can use control shift and plus to this option is displayed. If you want to select entire row, entire column, shift cell right या shift cell down. So accordingly you select some options. Suppose entire row, तो OK press करते हो तो एक row add हो जाता है. वैसे ही control shift और plus करते हो again. If you want to add an entire column, तो select that option and click on OK. तो entire column यहाँ पे select हो जाएगा. So just make a change here. It is not only control plus, it is control shift plus. क्योंकि प्लस का ऑप्शन हम लोग शिफ्ट के साथ यूज करते हैं, you cannot use it directly. Minus. Control minus, you get directly an option. Shift cell left, shift cell up, entire row you want to delete or entire column you want to delete. First of all, select the row which you want to delete. यानी यहाँ पे अगर मुझे ये row delete करना है तो यहाँ पे मुझे उसका selection करना पड़ेगा. फिर उसको press करते हैं Control Shift and Minus. तो वो delete हो जाएगा directly. If you are using Control Shift and Minus, that is Control Minus, तो वो delete होता है. Control plus and home. Move to cell A1. That is control plus home. तो वो first cell पे move होता है. Okay, आप simultaneously कुछ try कर रहे हो या shortcuts या just you are listening to my lecture? नहीं मैम ट्राई भी कर रहे हैं बट ना मैम कंट्रोल F10 से ना मैं मैक्सिमाइज करने का ट्राई किया विंडो F9 से मिनिमाइज तो हो रहा है बट कंट्रोल F10 से ना मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है. तो क्या करना है आपका ऑलरेडी विंडो मैक्सिमाइज्ड फॉर्मेट में ही है सो जस्ट रिस्टोर करो उसको. ये स्क्रीन होना चाहिए और उसमें आप कंट्रोल F10 करो तो होगा. क्या बोला मैम आपने? See just see on the screen. I am showing my pointer on the restore button. Restore button पे क्लिक कीजिए. Restore button पे क्लिक करने के बाद ये अगर फॉर्मेट है स्क्रीन का और इस पे अगर आप कंट्रोल F10 करते हो तो होगा.
ओके ओके मैम। बिकॉज ऑप्शन क्या है, पहले से ही आपका स्क्रीन मैक्सिमाइज्ड है और आप उसमें उसको मैक्सिमाइज करने को बोल रहे हो, तो स्क्रीन के बाहर चला जाएगा उसका विंडो। हाँ राइट राइट मैम। ओके, या शुड वी टेक द नेक्स्ट सेक्शन, या ये प्रैक्टिस करके देख रहे हैं आप सब? Okay, then we have, see, someone yesterday asked me about current date and time, na? So this is the shortcut, control plus semicolon to enter the current date. किसने पूछा था? Yes, somebody had asked me what is the shortcut for current date and time. Current date display करनी है तो who had asked me the shortcut for date? You can just give here as control and semicolon. It will display today's date. What is the meaning of this? ये एरर है या क्या है? नहीं मैम, एरर नहीं, उसका रो का लेंथ कम है लेंथ इसलिए कम लिखा है। है इसके लिए। ओके, तो you had asked me ना the shortcut for current date. Yeah ma'am, actually I was asking for current date and also the time. तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन है ना, कंट्रोल सेमीकोलन दे सकते हो डेट के लिए। अभी स्पेसिफिक कॉलम में अगर दोनों चाहिए तो जस्ट गिव अ स्पेस बार एंड अगेन एंटर कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन, तो दोनों आ जाएंगे। ओके मैम, ओके। कंट्रोल शिफ्ट एंड 1 is to format the number in comma format, like यहाँ पे यहाँ पे यू हैव दिस ऑप्शन ना, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, लाइक डॉलर देना है, कॉमा देना है, परसेंटेज देना है। तो while entering the number should be displayed using a comma, so you can give here as control shift plus 1। तो सेट ऑफ नंबर्स को सिलेक्ट करो और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और 1 प्रेस करो, तो उन सबका फॉर्मेट कॉमा में आ जाएगा। What is control shift and L? The filters what we had seen here. तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करती हूँ इधर कंट्रोल शिफ्ट एंड एल, ऑटोमेटिकली फिल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे। नो नीड टू गो इन द ऑप्शन हियर एंड सेलेक्ट फिल्टर।
Then what else we have? Control plus 0 to hide the selected column. So suppose this column I have selected this column, and control plus 0. So that column will be hidden. उसको वापस करना है तो क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ब्रैकेट. अभी m के बाद n गायब हो गया. कंट्रोल शिफ्ट एंड कनेक्शन प्रॉब्लम है. Yeah, what is this? Control plus 1. Like anybody can tell me, opens the format cell window, ये क्या होगा? Yeah, am I audible? Yes, ma'am. Okay, so just tell me someone, anybody can explain or anybody can answer this question. Na? Opens the format cell window, what it will do? Just try out control plus 1 क्या होता है? मैम सेल को जनरल में रखना है, नंबर फॉर्मेट में रखना है, या किस में? जो भी फॉर्मेट में रख रहा है उसका विंडो ओपन हो रहा है. हाँ, उसका विंडो ओपन होता है इन द सेंस व्हाइल एंटरिंग द डेटा. अगर आपको सैलरी डिस्प्ले करना है तो इट शुड बी इन अ कॉमा, लाइक 10,000 तो 10 के बाद कॉमा होना चाहिए. मार्क्स एंटर कर रहे हो या परसेंटेज डाल रहे हो तो उसमें डेसिमल प्लेसेस ही आने चाहिए. तो स्पेसिफिक कॉलम के लिए वो फॉर्मेट दे सकते हैं. राइट. दैट इज कंट्रोल 1 करते हो तो सिलेक्ट दैट कॉलम जिसमें आपको क्या स्पेसिफाइड नंबर से डिस्प्ले करना है. यू कैन सिलेक्ट दैट फॉर्मेट. देन कंट्रोल प्लस 5 है स्ट्राइक थ्रू. ये तो कट करना है, अगर किसी का डिस्प्ले करने में भैया कट हो गया है तो उसके लिए कर सकते हैं. कंट्रोल 9 हाइड द सिलेक्टेड रो. जो रो को आपको हाइड करना है वो कर सकते हैं. एंड शिफ्ट 11 इज इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट. यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्लस पे क्लिक करते हैं, उससे अच्छा शिफ्ट 11 करो, वो वर्कशीट ऐड हो जाएगा. इसमें से आपने कितने ट्राई आउट किए अभी? शिफ्ट 11 करके देखो हो रहा है कि नहीं. F11. F3. Yes, it is adding. शिफ्ट F11 हो रहा है. शिफ्ट F2 यू कैन ऐड ए कमेंट. अभी कमेंट किसके लिए यूज होता है? यूज करते हैं हम लोग कमेंट. यस मैम, मतलब एक्सेल में आपने किसी कॉलम में कुछ डाला है और आपको उसको एलोबोरेट करना है कि वो क्या है, तो ऐड उसमें ऐड कमेंट कर सकते हैं अपन. वो आपने हाँ, शॉर्ट लेकिन शिफ्ट F2. शिफ्ट और F2 है, बट कमेंट का हाँ, यूज उतना ही होगा या और किसी से कि क्या और कर सकते हैं उसमें?
कोई भी वैल्यू डालना है और वो वैल्यू अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन के फॉर्मेट में नहीं है तो आपको एंटर करना है जो बोला गया फॉर्मेट है उसको। मतलब मैम आप, हाँ राइट मैम, आप मतलब इनके, या बोलिए। मैम मैं बोल रही थी मतलब सेल में से अगर प्रॉपरली पूरा नहीं वो दिखता है राइट, हाँ सेल हाँ का हाँ अगर फॉर्मेट छोटा रहेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो आपको वो चीज दिखानी है तो जैसे ये एलोबरेट होगी वो चीज है वो यहाँ पे शो होगी, बराबर इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट। Shift plus F3 is open the Excel formula window. Now what is this formula window? Just try Shift and F3. ये क्या है, कौन सा आपको फॉर्मूला देना है उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया जाता है। नाउ सपोज आई एम सेलेक्टिंग एज एवरेज, तो एवरेज का एक्सप्लेनेशन वो देगा क्या है, returns the average arithmetic mean of its arguments which you can enter number, names, arrays or references containing numbers. तो यहाँ पे क्या देना है, टाइप ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक ऑन गो। अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना है मुझे एवरेज का फंक्शन कैसे यूज करेंगे, तो इधर हम लोग टाइप करेंगे इफ यू क्लिक ऑन गो इट विल हेल्प यू कि कैसा उसका सिंटैक्स है। एल्सवाइज हेल्प ऑन दिस फंक्शन, तो वो भी एक्सप्लेनेशन आपको वो देगा, लाइक F1 का शॉर्टकट देते हैं ना हेल्प ऑप्शन, वैसे ही मैक्स में भी वो दिखाएगा क्या रिटर्न करेगा और आपको ब्रैकेट में क्या डालना है, नंबर 1 नंबर 2, you can specify the cell range also. So these are the different functions what you can use. Shift plus F5 is search box. Same thing, control that is opens find and replace with all the specifications. कंट्रोल F भी कर सकते हो। F1 ये पता है आपको हेल्प के लिए यूज होता है वो शॉर्टकट, देन F2 is edit the selected cell। अभी ये कौन से ट्राई आउट किए, कर्सर अपना सेल कहाँ पे है वहां पे वो कर्सर प्लेस करके देगा। सपोज माय कर्सर इज हियर एंड आई एम प्लेसिंग F2, तो वो डायरेक्टली कर्सर आ जाएगा, यू आर रेडी टू टाइप। F4 is repeat the last action। हम लोग ने शीट ऐड किया था ना, तो वो शीट यहाँ पे ऐड हो गया। यस, इज इट क्लियर? अभी इतने जो हम लोग ने और शॉर्टकट्स सीखे हैं, हैज एनीबॉडी डाउट इन दिस, या वो हो नहीं रहा है ऐसे कुछ? हेलो मैम, आई हैव वन क्वेरी। बोलिए। जो आपने मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बताया हमें, कंट्रोल हाँ, एफ ये, तो F10 F9 सिर्फ एक्सेल का स्क्रीन ही मिनिमाइज हो सकता है क्या, बाकी और कुछ नहीं विंडो हो नहीं? सकते ना, जस्ट राइट आउट। देखिए ना, अभी हम लोग स्टार्ट हाँ करके देखते, वर्ड का करके देखते हैं। हाँ। अभी ये हमारा स्क्रीन है, उसको हम लोग कंट्रोल F9 करके देखते हैं। कंट्रोल F9 यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। अभी कंट्रोल F10 यहाँ पे करते हैं तो ये हो रहा है, रिस्टोर हो गया। इसको अगर कंट्रोल F10 करते हैं तो वो मैक्सिमाइज हो रहा है। सर्टेन शॉर्टकट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल, लेकिन यहाँ पे हाँ कंट्रोल F9 यहाँ पे देखो वो ब्रैकेट्स दिखा रहा है, ओके whereas control F10 it's working as restore and maximize. ओके Now if ओके। I'm using your control F4 तो it will be close, it is asking me बंद करना है कि नहीं। So control F9 is not working in Word, control F10 and control F4 are applied, like Excel में जैसे था वैसे वो हो रहा है। आपने मैम अभी किया ना स्क्रीन पे, तो हाँ वो हमें मिनिमाइज होके शो नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, वापस दिखाती हूँ। हाँ वो मिनिमाइज नहीं हो रहा है ना, कंट्रोल F9 इज फॉर ओके व्हाट,
यस, F9 फॉर मिनिमाइजिंग। हाँ, तो मिनिमाइज यहाँ पे ब्रैकेट्स दिखा रहा है, हाँ, कंट्रोल F9 ब्रैकेट्स दिखाता है, तो वर्ड में इसका ऑप्शन अलग है। ओके। यहाँ पे वो कंट्रोल F10 में करती हूँ तो वो रीस्टोर हो रहा है, और वापस कंट्रोल F10 करती हूँ तो मैक्सिमाइज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल F4 करते हो तो वो बंद हो जाएगा। ओके से मैम। इट इज यस यस, आस्किंग मी डू यू वांट टू सेव और नॉट, ओके मैम, तो पूरा यस। हो जाएगा। थैंक यू मैम। Okay, F5 is go to a specific cell. यहाँ पे रेफरेंस दे देना क्या चाहिए, सपोज G5 दिया, okay, it will go to the specified cell. F11 is to create a chart from the selected data. F7 तो पता होगा स्पेल चेक करने के लिए। F11 is to create a chart from selected data. Now if I directly use F11 वो वर्क होगा? यहाँ पे डेटा किधर है, इसके लिए उसने कुछ नहीं सिलेक्ट किया। In Excel, you have to select some data first of all. Yeah, the screen is the screen visible? यस मैम। हाँ, वो क्लोज हो गया था इसके लिए। See, we were in F11 option. F11 create a chart from the selected data. तो आपको यहाँ पे डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करो, फिर ही वो चार्ट दिखाता है। बट ऑप्शन इज ओपन, ऑप्शन गेट्स ओपन for F11. If you are not selecting any data and if you are applying F11, the blank chart will be displayed. Nothing is displayed on the screen. Try करके देखो। Don't select anything, just leave the screen as blank और उसको select करो blank sheet को। See this, चार्ट एरिया में कुछ भी नहीं है। चार्ट 1 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं है क्योंकि सिलेक्टेड ही नहीं है कुछ। बस शीट सेकंड में कुछ तो टाइप करो और सिलेक्ट दैट डेटा। सपोज यहाँ पे हम लोग लेते कुछ नेम, इंग्लिश के मार्क्स, टोटल, now if I'm selecting this one, and I'm using F11, so it will display the format of the data what is selected. So आपको अगर यहाँ पे कौन सा स्टाइल चाहिए उस स्टाइल में डिस्प्ले होगा। If you want to change the type, you can select the change type format. Line चाहिए, pie चाहिए, bar, area, any format you can select. Yeah, you have any, all of you, सबको समझ में आ रहा है? Any doubt in this? यस मैम, समझ रहा है, ये प्रैक्टिकली करके देखा। हाँ हाँ, देखा ना, ठीक है। Yes, ब्लैंक ma'am. का भी सिलेक्ट करके देखा ना, ब्लैंक में कुछ नहीं दिखाता है। यस मैम, राइट। हाँ।
F12 is save as, escape is cancel a cell entry। और अभी ये देखो करके alt plus, तो वो होता है क्या? यहाँ पे हम लोग का सेकेंड शीट है ना, ऑल्ट प्लस करते हैं तो इट सिलेक्ट्स द सेल रेंज ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे सेल का टोटल हो जाता है। No need to type the cell range and no need to do all those things. Then what is wrap text? Wrap text क्या होता है, कोई बताएगा? Yes, can anybody tell me wrap text का क्या मतलब है? वो जो अगर नाम वगैरह दिख नहीं रहा ना तो सेल में एडजस्ट हो जाता है रैप टेक्स्ट से। I didn't get your answer. नहीं समझा क्या बोल रहे हो? मैम अगर ये सेल में फिट नहीं हो रहा ना तो जो हाँ। सेल है ना उसका लेंथ एडजस्ट कर लेता है रैप टेक्स्ट में। It gets continued या वो एक के नीचे एक दूसरे सेल में नेक्स्ट सेल में ऐड होगा? एक ही सेल में एडजस्ट कर लेगा, जो भी सेल में जो भी नाम लिखा हुआ रहेगा ना उसी सेल में एडजस्ट कर लेता है। ओके, ये भी ट्राई करके देखो, Alt F1 और Alt F4। जस्ट ट्राई आउट ऑल द शॉर्टकट्स, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना प्लीज। क्या 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 ट्राई आउट किया? सब हो रहा है वर्क? रैप टेक्स्ट वाला अल्ट इंटर ये नहीं हो रहा, अप्लाई नहीं हो रहा, एंटर ऑल्ट प्लस एंटर नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे ट्राई किया, लिखा ऑल्ट प्लस एंटर, हो रहा है ना? ठीक है, हो गया। मेरे लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है ये। क्या करें अभी? जो मैंने किया आपने देखा ना अभी? हाँ वो देखा मैंने, लेकिन यहाँ पर हाँ। नॉर्मल आप टाइप कर रहे हो और क्या हो रहा है फिर? कुछ नहीं, आगे जा ही नहीं रहा हो। जस्ट टाइप योर नेम, मुझे आप स्क्रीन दिखा सकते हो क्या कर रहे हो? एक मिनट,
मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपसे? So, Jayesh, wait, we are making you co-host so that you can share your screen. ओके मैम, नो प्रॉब्लम. Jayesh, now you can say, share your screen. ओके मैम. मैम यहाँ पर मैं अल्ट इंटर दबा रहा हूँ, नहीं हो रहा है. देखो कुछ नहीं हो रहा. just try to type first of all. हाँ, यहाँ पे टाइप करके देखो ब्लैंक एरिया में कहीं पे भी. उसका लेन ये कर रहा हाँ, था. कम कर दे दो. हाँ, नहीं हो रहा. नहीं, just type it, try to type in the next cell and then if it's going outside तो वो होना चाहिए. ओके, अब बाहर से हाँ, अभी वहां पे वापस टाइप करो. फिर टाइप करो यहाँ पर. हाँ, try it out. हाँ, don't click. जब आप क्लिक करते हो तभी नहीं होगा वो. कंटिन्यूअसली ट्राई टू टाइप और उसके बाद ऑल्ट एंटर करो. ओके, अभी होगा. हाँ, अभी होगा वो. अभी होगा. हाँ, राइट, कंटिन्यूअसली टाइपिंग फिर वो होगा. ओके मैम, ओके, थैंक यू. या एनी मोर डाउट्स इन दिस, या उससे पहले भी कोई टॉपिक्स हुए उसमें भी कुछ डाउट है क्या है, या फंक्शंस अभी आप लोगों ने जो भी शॉर्टकट्स देखे उसमें कुछ डाउट है? पार्टिसिपेंट किसी को कोई डाउट है क्या? अभी मैम ने जो भी शॉर्टकट कीज हम लोग को बताई उसमें है तो यू कैन आस्क. इससे पहले भी कोई सेशंस में डाउट्स है या प्रीवियस टॉपिक जो जो कवर हुए उसमें भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क. Okay, so you can ask any doubt regarding to Excel if you want and if you have. नेक्स्ट सिनेरियोस का टॉपिक हो गया है, गोल सीक हो गया रहेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हुए रहेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? Yes, ma'am. मैम, आप ये शीट हमको शेयर कर सकते हैं क्या? ये इस पे. हाँ, मेल पे कर सकती हूँ. ओके, आप ना मैम मुझे ये व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए. मैंने नहीं क्या आपको मैसेज किया Okay. है. हाँ, Okay. यस. ओके, थैंक यू मैम. सो एनी डाउट इन प्रीवियस टॉपिक्स जो कवर हुए हैं या फिर
एक बार और रिवाइज करने सब क्लियर है तो I have no questions for that. मैम क्लियर है। Okay, fine. ठीक है, so we will end the session today then. Yes, shall we end the session today? Today's session. मैम आई session? हैव वन क्वेरी मैम, बोलिए. एक मतलब मैक्रो का बता सकते हैं क्या कंसेप्ट आप एक्सेल में? Macro is what you have to first record the condition. अगर आपको वही चीज बार बार करनी है तो उसके लिए आप मैक्रो का स्टेप्स करके सेव कर सकते हो. Just remember the shortcut or the name of the macro and if you use that name or the shortcut वो परफॉर्म हो जाएगा. ओके मैम, थैंक यू. Okay, then we'll end the session. मैम हाँ बोलिए. ये माइक्रो वाला में लाइव दिखा हो क्या? मैंने एक रिकॉर्ड किया हुआ है। हाँ दिखाइए ना, चलेगा. ओके मैम एक माइक्रो रिकॉर्ड किया है जिसमें ना मेरे पास अभी ये टोटल 84 कॉलम्स है। हाँ. 84 कॉलम्स है। इसमें जो मैक्रो है उसमें क्या होगा, ये जो सेल है जैसे यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर 1 2 डायरेक्टली यहाँ से 3 3 4 है. हाँ, जिसको भी नंबर रहेगा उतने सेल अब मुझे चाहिए, मतलब उतने विजिबल चाहिए, बाकी के सेल हाइड होने चाहिए। ओके. उसके बाद ये जो पूरा डेटा है ये में जाके उसका जनरल होना चाहिए, उसका कंटेंट। ओके. ये मेरा कंडीशन है। उसके बाद अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना डेट है, यहाँ पर डेट है। ये जो फॉर्मेट है ये राइट क्लिक करके डेट होना चाहिए, फॉर्मेट सेल में जाके डेट होना चाहिए. डेट होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ जो नंबर रहेंगे इनका फॉर्मेट जनरल। हाँ. ऐसे माइक्रो मैंने रिकॉर्ड किया है तो मैं वो रन करके दिखा था अभी। हाँ. अभी मैंने प्रेस करा, शॉर्टकट की रखा है मैंने कंट्रोल शिफ्ट W करके, हाँ. तो मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी ये रन हो रहा है। हाँ. इसमें 3 सेकंड लगेंगे, वो पूरा अप्लाई हो जाएगा। हो गया पूरा apply। हाँ. ये देखो जो सिर्फ विजिबल है हाँ वही सिर्फ विजिबल है, जिनको नंबर्स है वही सिर्फ विजिबल है, बाकी का सब हाइड हो गया। अभी मैं बाकी सब हाइड हो गए. अगर मैं अनहाइड करूंगा तो पूरे सेल आ जाएंगे। ये देखो। हाँ. जस्ट टेक केयर व्हाइल रिकॉर्डिंग द मैक्रो कि आप कोई गलत स्टेप ना करो. अगर बीच में लाइक कंट्रोल Z और अंडू भी करते हो तो भी वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, वो हिसाब से सब प्रोसेस होगा जो आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसके. राइट मैम, राइट, वो भी हाँ. रिकॉर्ड हो जाता है उसमें। ठीक है. Okay, what all things you have learned in previous sessions? कोई summarize करके बताएगा मुझे? Yes ma'am, I can share what we have learned in previous sessions. Okay. हाँ, विजय अग्रवाल सर ने हम लोगों को टॉपिक सिखाया जैसे कि मैजिक ऑफ फ्लैश फिल, Okay. टेक्स्ट फॉर्मूलाज, वी हाँ. लुकअप, एक्स लुकअप, पाइवोट टेबल, डैशबोर्ड, Okay. ये सारी चीजें. Okay. So एंड making circle. ओमकार सर ने हमको फॉर्मूलाज सिखाए थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नेम मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर, MIS रिपोर्ट, दीज ऑल थिंग्स. Okay. यस मैम.
दो सेशंस हो गए सब. हाँ, ये सब हुआ था. Okay. Quite good session. Okay, fine. So what all things you require more? अभी इस पे आपको क्या क्या देखना है? और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया है, डेट फॉर्मेट हो गया है, टेक्स्ट कंटेंट्स हो गए, मैथ फंक्शंस हो गए. Fine, most of the topics are covered mostly. MIS reports, scenarios, goal sheet, those are required. और अपना VLOOKUP, HLOOKUP and pivot table. That's it. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. ओके पार्टिसिपेंट, सो आपको किसी में कोई डाउट है? इन केस आपको डाउट नहीं है तो हम अपना जो सेशन है वो यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं. एनीवन हैज एनी डाउट? फाइन. इन केस यू डोंट हैव एनी डाउट, so just end our session. Yeah, And yes. I would like to call Mrs. Priyanka Shukla ma'am to please give a vote of thanks. Sorry ma'am, it's Priyanka Mishra. Let me correct myself. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, everyone. Before moving towards vote of thanks, I would like to announce to all the registered participants that for 7th day of FTP, you all will be getting one assignment on your registered mail ID, and you need to complete that assignment and submit on or before 28th March, 12 p.m. And participant, those who are submitting their assignment, they only will be getting the certificate. Moving further, it is an honor for me to propose a vote of thanks on behalf of Matrushri Kashiben Motilal Patel, Senior College of Commerce and Science, on 6th day of FDP. I want to thank to all the resource persons for all the valuable knowledge and practical information they all have shared with us throughout the 6 days. Because of you only, FDP is successful. We appreciate your guidance and we express our gratitude for such awesome sessions. First of all, I would like to thank Mr. Vijay Agarwal sir for day 1 and day 2 sessions. Sir has given us so much of knowledge on various topics like magic of flash fill, text formulas, VLOOKUP to XLOOKUP, pivot table, dashboard, and so many things sir has taught to us. Thank you so much, sir, for such a wonderful session. I would also like to thank Assistant Professor Omkar Kadam sir for explaining all of us like formula topics like formulas, conditional formatting, name manager, scenario manager, MIS report, etc. Thank you so much, sir. I would thank to Anga Khandeval ma'am for her way of explanation, easy and simple way. Ma'am has shared her knowledge on various topics like Excel mark sheet, calculation of total, average, percentage, grade, rank, certification, Excel salary sheet calculation, DA, HRA, tax, etc. and Excel shortcut from basic to advanced. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful session. Yeah, thanks. I would thank to our management team, Sri Dombivali Mitra Mandal, for always being there for us. I would also like to thank our Vice Principal, Mrs. Madhuri Nandarwar ma'am, for initiating such kind of effort and for organizing FTP for all the participants. Without your contribution, this program might not have been possible. Thank you so much, ma'am. My heartful thank goes to NAC coordinator and BBI coordinator, Mrs. Kirti Pillai ma'am, for always being so supportive and for her contribution to this program. My heartful thank goes to NAC steering committee for all the efforts they have taken for this FTP. FTPU means I also thank to the entire team for all the efforts they have taken from management till execution. Thank you so much to the entire team. Last but not least, I would like to thank to all the participants for your engagement throughout these 6 days. And because of you people, session becomes so interactive. Thank you so much, everyone, and have a wonderful day. Once again, I am reminding to you all
For 7th day of FDP, you all will be getting one assignment on your mail ID. You have to complete that assignment and submit. इस फीडबैक लिंक भी हम आपको शेयर करेंगे ईमेल आईडी पे, उसके साथ ही आपको असाइनमेंट सबमिट करना है. If have any query related with assignment, you can ask here. Okay, ma'am, can I leave because I am having a Yes, session? ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes. Thanks a lot for having me here, and Thank I you so also much, ma'am. it was a really interactive session. If further if there is any sessions conducted, I would like to join again. Thank you so much for Yeah. your kind words, ma'am. Thank Yeah, you so yeah. much. Yeah, thanks. All the participants kindly fill feedback form. It is there in the chat box.